चल करते हैं। ऐसे हो गया था ना। ये क्या, लोन्स फ्रॉम शेयर होल्डर, ये सब भी किया ना। हाँ। फ्रॉम शेयर होल्डर द कंपनी। ठीक है। Extracting profits from company. Many UK companies are small trading companies, and consideration is often given to tax efficient means of extracting profits in either an income or capital form. Okay. This section considers the methods of extracting profits from a company and the implications for both the company and the individual shareholder and or director. It's a 5T dividend. Okay, I see. City implications for company. The salary paid to employee and NIC the company transfer this. हाँ, this reduces the trading profit. ठीक है, कुछ देखने देखो. नहीं। Other possibilities. There are a number of possible ways of extracting profits depending on the individual situation, which include charging rent, charging interest, and funding a pension scheme. हम्म। Further details of these extractions are given. Okay. When property is to be bought for the use of the company, it may be preferable to consider owning it personally and charging the company rent for its use. The rent would be an allowable deduction for corporation tax, providing it was not more than a commercial rent. When the individual retires, the property may be sold. The property may be sold with the shares or could be retained so that the rent received would supplement the individual's pension income. A further advantage of direct ownership is that if the company owns the asset, there will be two charges to tax before the individual receives the proceeds of the sale of the property. The company pays corporation tax on any gain arising. The individual would then be taxable when the profits were extracted from the company. बरोबर. So इससे बेहतर है कि खुद के नाम पे रखो प्रॉपर्टी. A slight drawback of holding the property outside the company is that if IHT became an issue, BPR would be available. BPR would only be available at 50%. However, if the business is sold before the individual dies, this would not create a problem. If there was a concern about a charge, insurance could be taken to cover any liability that may arise on the death. हाँ, ये 50% क्योंकि वो इन्वेस्टिंग के लिए हो गया ना, इसलिए ना. नहीं भी लोगों ने क्या बोला, बीपीआर के लिए बोला है ना। बीपीआर के लिए 50% हाँ. बोला है वो लोग ने। प्रॉपर्टी आउटसाइड ऑफ द कंपनी, तो अगर तू बीपीआर का देखेगा तो जो तेरे प्रॉपर्टीज और वो है ना, बिल्डिंग्स प्रॉपर्टीज, उसके लिए 50% ही है। 50% रहेगा, ठीक है ठीक है. कि उन्होंने क्या बोला है ओके. कि बिल्डिंग्स आउटसाइड ऑफ बिजनेस, समझा, लाइक जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है वो, वैसे सब बिजनेस के लिए हाँ, वही वही वही. वो आईएसटी के लिए 50% का होता है। पूरा नहीं देते कि तू पूरा ठीक है, बिजनेस के लिए नहीं समझ यूज गया. किया रहेगा ऐसा। यस. फर्दर ऑन द डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी, इट वुड नॉट क्वालिफाई फॉर बिजनेस. हाँ, बैडर के लिए अवेलेबल नहीं होगा इवन इफ सोल्ड at the same time as the disposal of the company share. This is because the associated disposal rules do not apply where a market rent is charged to the company by the individual for the use of the asset. हम्म। बराबर. Interest के लिए, where the individual has lent money to the company, interest may be paid by the company to the individual. The rate applied cannot be in excess of a commercial rate. There may be a timing advantage as the company will deduct the interest on the accrual basis, but the individual is not taxed until it is received. Okay. Consider a company with a year ended 31st March 2025. Interest can be accrued within the account for that period, but providing it is not paid until 6th April 2025, it will only be taxed on the individual in the tax year 25-26. The individual will be taxed on the interest received in excess of the savings income netted band at 20%. हाँ, ये तो basic है. The savings income netted band is 1,000, 5,000 or nil, 500 or nil.
Where the individual and the company are connected, the interest must be paid within 12 months at the end of the accounting period to be allowable as deduction for the period in which it is accrued. Oh, तो बेसिकली ये एक दूसरे को यही कर रहे हैं। 12 महीने में पे किया तो कंपनी डिडक्शन ले सकता है, और 12 महीने में पे किया तो इसको वही साल में टैक्स भी लगेगा। हम्म। It is not, it only becomes an allowable deduction for corporation tax when it is paid। बराबर। तो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए द कंपनी में मेक कॉन्ट्रीब्यूशंस टू अ पेंशन स्कीम ऑन बिहाफ ऑफ द इंडिविजुअल, providing they fall within the approved limits, there would be no income tax or NIC liability। हाँ 60, ठीक है। The main drawback of this method of extraction is that the pension funds cannot be accessed until the individual is at least 55। ठीक है, समझ लिया, ये आया मेन। हम्म। सो अपने को पर्सनल सर्विस कंपनी भी क्या है, द पर्पस ऑफ द लेजिस्लेशन ऑन पर्सनल सर्विस कंपनी इज टू काउंटर प्रैक्टिस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस which were becoming widespread। Reference is sometimes made to these rules as pay off payroll working, or the IR 35 legislation, which is the name of the original HMRC press release issued that set out the objectives of the legislation। The scheme that the legislation aims to combat are as follows. Many business have been reluctant to pay the individuals for their services directly as self-employed individuals, because if HMRC reclassify them as employees, there can be substantial cost and penalties incurred by both the self-employed business and the business employing their services, the client। बराबर। हम्म। As a result, the individuals who were self-employed have been encouraged to set up the companies which the client would then contract with and pay the company for the individual service। Where the client is paying a company, it would be more difficult to argue that the individual was a direct employee of that client। हम्म। बराबर। And मतलब क्लाइंट इज companies पेइंग द कंपनी, मतलब जो हमारा, मतलब जैसे वो सर ने sorry, एग्जांपल दिया था कि हम बंदा खाली उनको दे रहे हैं, लेकिन क्लाइंट डायरेक्टली कंपनी को उस चीज का पैसा दे रहा है, एंड देन पैसा, एंड yes, देन कंपनी कम सैलरी उस एम्प्लॉय को दे रहा है, बाकी का प्रॉफिट खुद रख रहा है ऐसा। ऐसा। फिर कंपनीज हैव एनकरेज्ड, पर इसमें क्या केस है कि कंपनी भी इसका ही है जो काम करने जा रहा हाँ, राइट राइट राइट। है। Companies have encouraged existing employees to resign, set up a company, and the client would then use their services through that company, resulting in a major saving of NICs for that client। The company owned by the individual worker is referred to as the personal service company। हम्म। Advantages to the individual. Realize that operating through a company could have advantages as follows. The personal service company invoices for the individual services plus VAT if appropriate, and the client pays the invoices gross without having to apply the pay regulations। ये रेगुलेशंस। There are no employers NIC payable। The personal service company pays CT at only 19% and 25% on 25%। profits net of any expenses wholly and exclusively incurred for the trade। हम्म। The individual is an employee of the PSC, or better still, a director without a contract of employment, thereby sidestepping the national minimum wage regulations। ओ भाई ये क्या है? बेसिकली ये डायरेक्टर ज्यादा ही पैसे अगर ले रहा है, मतलब और डायरेक्टर विदाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो बेसिकली वो नेशनल मिनिमम वेज रेगुलेशंस को मतलब साइड स्टेप करता है। इसलिए तू मतलब वो देखेगा तो वो लोग हमेशा एक सैलरी तो वो लोग देते ही है, मतलब खाली वो दिखाने के लिए। अगर अगर उन्होंने वो नहीं दिखाया तो ऐसा दिखेगा कि ये बंदा पूरा ही नोशनल सैलरी ले रहा है अपने लिए। तो वो हम्म। लोग दिखाने के लिए मतलब वो दिखा जाए कि अरे सैलरी ऑफ इतना है, बट फिर वो जो नोशनल सैलरी रहता है वो भी इसी का कमी रहता है एक तरीके से, ऐसा। बराबर।
So the individual could draw sufficient remuneration or director's fee to exceed the lower earning limits for NIC purposes, thereby to exceed the lower earning limits for NIC purposes, thereby creating entitlements to benefits. Yes. But below the primary threshold, so that the no class one liabilities arise. Barabar. The individual can then draw out the rest of the profits of the business as dividends. Dividends. There is scope of dividing the shareholding of the PSE with the spouse or civil partner so that the two basic rate bands are utilized before higher rate income tax is payable. Barabar. Hmm. Income could be rolled up indefinitely, net of the 19% or 25% corporation tax charge, so that good and bad years can be evened out, and the individual need never pay higher rate tax unless the individual chooses. As a result, such schemes, HMRC as a result of such schemes, HMRC introduced rules to combat what they perceived was a loss of tax or NIC arising where individuals use the company to bill their services to a client. What makes a PSC? HMRC looks Hmm. at the relationship between the client and the worker. Services provided by the worker to client, शेयर होल्डर वर्कर का अच्छा ये क्लाइंट है और ये क्लाइंट फी पे कर रहा है कंपनी को वर्कर शेयर होल्डर भी है ठीक है बराबर मेक सेंस तो एचएमआरसी विल आस्क द क्वेश्चन ये पढ़ना है क्या ये लेम लग रहा है थोड़ा एक मिनट ना। बेसिकली ये वही है कि जैसे तेरा जो शेयर होल्डर है, मतलब मतलब एक पीएससी के अंदर कैसे रहता है, वही डायरेक्टर है, वही शेयर होल्डर है, वही सब कुछ है, राइट। हम्म तो एचएमआरसी क्या करता है, एक सवाल बराबर पूछता है कि ये जो अगर कंपनी, मतलब अगर ये एक मिनट, वुड बी वर्कर एंड एम्प्लॉय द क्लाइंट ऑफ सेल्फ, मतलब इफ द कंपनी वाज नॉट देयर, तो क्या ये काम कर पाता, मतलब क्या ये अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हाँ क्या ये होता, बंदा काम ऐसा वो सवाल पूछते हैं। यस अगर नहीं होता तो इसका मतलब है कि वही बंदा काम कर रहा था इससे, मतलब शेयर होल्डर वाज द ओनली वर्कर, ऐसा। या कंपनी फॉर्म हम्म हुए बिना काम हो ही नहीं सकता था, ऐसा ये लोग बोलना चाहते हैं। हाँ ठीक है ना यहाँ पे बढ़ते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड वाया पीएससी टू अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन अच्छा हाँ इसमें ये था स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का For services provided to a small organization, only relevant engagements will be caught by the rules. These are the contract between the company and the client, which would have been a contract of employment in the absence of the PSC. हम्म। It is the responsibility of the PSC to determine whether any of its engagements are relevant engagements. बराबर. Although the client of the PSC is slightly beneficiary of the abuse, they are not the focus of the provisions. हम्म। हाँ ठीक है. The PSC has to treat the income from relevant engagements arising in a tax year as if it is were paid out of पेड salary आउट to ऑफ the सैलरी। employee and the account of the notional income uh, tax and NICs on 19th April following the end of the tax year. The notional salary is being paid at the end of the tax year. Salary is deemed paid. The notional salary is the income from the relevant engagements reduced by the following. Any actual salary and benefits received in the year, expenses incurred by the company which would have been deductible under the income rules if the individual had incurred them personally, contributions made by the company to an occupational pension scheme, employees NIC during the year on actual salary and on the notional salary, 5% of the gross payment from relevant engagements as a flat rate deduction to cover such things as overheads and training. It is not possible to deduct actual expenses instead. Whether or not, sorry, एक second, 5% of the gross payments from relevant earnings as a flat rate deduction to cover
such things as overheads and training, whether or not the money is spent. Okay. भाई It is not possible तो to. अपन तो बेसिकली It is अपन not ये जो possible पांच to be परसेंट का करते थे, actually. ये स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं था। दिस वाज जस्ट कि भाई जो एम्प्लॉय हाँ ये इधर आ रहा है काम करने को, वो इधर आने के बाद जैसे नॉर्मल जो एसी की हवा खा रहा है या चाय पी रहा है या ऐसे सब चीजें जो रहती थी, वैसा है ये यस स्टैट्यूटरी डिडक्शन। आई यूज्ड रिडक्शन टू है अज्यूम ये। कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन की तरह हमें हम्म। मुझसे माइनस करना है। हाँ वही, बट ठीक है, अभी अब वो लोग ने बोला कि वेदर दिस मनी स्पेंट और नॉट, अपने को ये करना ही है, तो इट्स गुड एज स्टैंडर्ड ठीक है। ऑप्शन होगी, ठीक ही है। ठीक है, फिर ये फॉर्मेट है इस चीज का। आखिर आवाज नहीं आ रही। वर्ड बोला मैं देखो बोला। अच्छा सब नहीं, मैं नहीं, वो भी मेरे को नहीं आया था बस। टू अवॉइड अ डबल टैक्स चार्ज टू टैक्सेस, द नोशनल सैलरी द नोशनल सैलरी एंड द एनआईसीज आर अलाउेबल फॉर कैलकुलेटिंग द कॉर्पोरेशन टैक्स प्रॉफिट्स, वेयर डिविडेंड्स आर सब्सिक्वेंटली पेड आउट ऑफ हिज इनकम दे आर इग्नोर्ड एज पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स टैक्सेबल इनकम। ओ, तो मतलब डिविडेंड्स के ऊपर टैक्स नहीं है पीएससी के थ्रू आने के बाद। इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल तो है ना टैक्सेबल एज पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स टैक्सेबल इंडिविजुअल्स टैक्सेबल इग्नोर्ड, इनकम। इग्नोर्ड एज पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स टैक्सेबल इनकम, मैं वही बोल रहा हूँ। ओ, टू अवॉइड डबल टैक्स, ओके। तो डबल टैक्स कहाँ पे लग रहा है? मतलब नोशनल सैलरी को नॉर्मल 20 24, सॉरी 20 40 45 में ले रहे हैं, इसलिए डिविडेंड की तरह कंसिडर नहीं कर रहे, ऐसा बोल रहे हैं क्या ये लोग? हाँ हाँ हाँ, मोस्टली वैसे ही रहेगा। ओके। ये पढ़ गए। ये सर्विसेज क्या है? प्रोवाइड। सर्विसेज प्रोवाइडेड वाया अ पीएससी टू अ मीडियम और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, where a medium or large client organization engages with the PSC, it is the it is the responsibility of the client to determine the status of the individual worker. The client will issue a status determination statement to the individual which sets out their determination. If the client determines that the PSC rules should apply, then it is required to calculate and pay the income tax and the NICs on the deemed direct payment. The DDP is calculated as set out below. Payment in respect of the services provided net of VAT. Okay. Direct cost of materials incurred by the PSC, deductible employee expenses incurred by the PSC, deemed direct payment DDP. Okay. एक सेकंड, ऊपर ले, सॉरी सॉरी, ना ऊपर ले। ओके। आई थिंक ये जो है ना डीम डायरेक्ट पेमेंट, ये क्लाइंट करता है एम्प्लॉयर को। ठीक है। तो ये देखेगा ना, पेमेंट कंपनी इन को ना, इन पीएससी रिस्पेक्ट को। ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, तूने जो मेरे को सर्विसेज दी हाँ। उसका मैं पेमेंट कर रहा हूँ, लेस मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इनकर्ड बाय द पीएससी। ठीक है। एंड डायरेक्ट का मतलब बेसिकली तेरे को अगर कुछ चीजें खरीदनी पड़ी थी मेरा ऑडिट करने के लिए या मेरा काम करने के, तो वो एंड डिडक्टेबल एम्प्लॉय एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द पीएससी। अभी कई बार ना कंपनीज जो रहती है ना, वो एम्प्लॉयज को बेसिकली ट्रैवलिंग अलाउंस देती है कि अगर तू यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो इसी मैंने को ट्रैवल, तो ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस होगा, डिडक्टेबल एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, ये सब, तो आई थिंक ये डीडीपी क्लाइंट करता है एम्प्लॉय को। समझा? हाँ, ये देखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लाइंट टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल वर्कर। बराबर। स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल वर्कर, बराबर। यहाँ पे भी बोला है, इफ द क्लाइंट डिटरमाइंस दैट द पीएससी रूल शुड अप्लाई, देन इट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पे एंड द इनकम टैक्स एनआईसी एंड द इनकम टैक्स एंड एनआईसी ऑन द डीम और डायरेक्ट पेमेंट, क्योंकि क्लाइंट को भी देना पड़ेगा ना वो एम्प्लॉय एम्प्लॉय।
जो भी आएगा काम करने उसको, चीज। एनआईसी वगैरह. In order to avoid double taxation, the DDP is deducted from the payment made by the PSC to the worker, such as salary, before calculating the income tax and NIC on the payment. बराबर. जब कंपनी, जब पीएससी खुद अपना एनआईसी वगैरह ये करेगा. हम्म. Withdrawal investment from a company. When a shareholder wishes to withdraw his, her, or their investments from a company, there are a number of exit strategies available. अच्छा, ये खत्म हो गया क्या पीएससी का कंसेप्ट? हाँ. हाँ, ठीक है. द शेयर होल्डर्स कुड सेल द शेयर्स इन द कंपनी. अच्छा, ये आएगा अभी वो 75% का जो अपने को कल डाउट हाँ. था. हाँ, ठीक है, ठीक है. When a shareholder wishes to withdraw his, her, or their investments from the company, there are a number of exit strategies available. The shareholder could sell the shares in the company. The company could purchase the shares back from the shareholder, or the company could put into liquidation. Could be put into liquidation. Sale of shares. The simplest method of withdrawing investment in a company is to sell the shares. This may not be easy as it sounds, as there is no ready market for shares in an unquoted companies. They can usually only be sold to other shareholders, or with their permission to a third party. हम्म. बराबर. If the shares are sold, the main tax to consider will be CGT and the availability of ladder. Most shares in unquoted trading companies will be qualifying assets if the individual has been a full-time employee or director of the company. Therefore, if the shares have been owned for at least 2 years, Badder would apply. Note that investors relief may available, but the shares, ठीक है 6 से बात होना चाहिए, और shareholder cannot be an employee. Before the shares are sold, it may be possible to pay a dividend, assuming the company has distributable profits. This would reduce the value of the shares on sale. हाँ, after अपन वो ex dividend लेंगे, ठीक है. So एग्जीबिटेड. हाँ. to decide if this is worthwhile, it will be necessary to consider the tax rates that apply to the amount received by the shareholder. Dividends are हम्म. taxed at 0%, फिर ये basic, where bidder or investors, हाँ ठीक है 10% पे होगा. Therefore, BR. बेसिक रेट अच्छा, टैक्स. बेसिक रेट टैक्स पे, हाँ, बेसिक रेट टैक्स पे may benefit from a dividend being paid before the shares are sold, but a higher or additional rate taxpayer with dividends in excess of 500 would not. हम्म. Oh, okay, right. Purchase of own shares, where it is possible to sell the shares to another person. It may be possible for them to be bought by the company. Hmm. Depending on how the transactions is structured, the amount received for the shares will be treated as an income distribution, dividend, or a capital payment. Okay. The income distribution will trigger a tax liability for an individual who has dividends in excess of 500. Assuming battle is available, it may be better structured as a capital disposal. Where the rate of capital gains tax is 10%. Okay. Conditions for treatment as a CGT disposal, if not treated as dividend. The company must be an unquoted trading company. Companies quoted on the AIM are treated as unquoted. AIM वाला मेरे को अभी तक समझा नहीं क्या है. एम अरे ध्यान देना. बेसिकली वहां पे लंदन स्टॉक एक्सचेंज एंड एम रहता है. एम जो आता है वो उसके नीचे आता है लंदन स्टॉक एक्सचेंज के. जैसे, ओके. हाँ, ओके. जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, राइट? वैसे ही. अब हम्म. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारे BSE देखो. नेशनल स्टॉक मार्केट के तो मतलब नीचे ही आएगा ना. वैसे ही है एआईएम हाँ, जो आता हाँ. है नीचे आता है एक तरीके से. The shareholder must be resident in the UK. The shares must normally be have been owned by the shareholder for at least 5 years. हम्म.
5 years वाला, अच्छा 3 years if inherited including the ownership of the deceased person. If acquired from the spouse or civil partners, the combined length of the ownership is considered. ठीक है. The shareholder must either dispose of his, her, or their entire interest in the company, or the interest must be substantially reduced. This means that the shareholder's percentage shareholding after the repurchase does not exceed 75% of the shareholder's previous percentage holding. क्या क्या समझा ही नहीं मेरे को. Either it takes off. शेयर है ना, फोर्थ वाला ना। बेसिकली क्या करता है तू, तू तेरा 75% निकालता है। ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल इफ यू हेल्ड लाइक, क्या बोलते हैं, आई थिंक ये वैल्यू के पर्सपेक्टिव से ज्यादा होगा रादर देन जस्ट द शेयर होल्डिंग। ठीक है। अगर तेरा प्रीवियस परसेंटेज ऑफ होल्डिंग फॉर एग्जाम्पल उस कंपनी में लेट्स से 60% का था, बराबर है। लेट्स से कि तू पहले उस कंपनी में 60% ओन करता था। अभी अगर तू 30% बेच देगा तो वो अलाउड नहीं है, लेकिन अगर तू 60 का 75 पहले कर, कितना आता है, 60 का 75 करेगा तो 3/4, 3/4 इज 15, आई थिंक 45 आता है। हाँ 45% आता है। तो तेरे को 45% से ज्यादा रखना है। ओके. ठीक है। ओके तो मतलब जब तू तू अभी बेच, हाँ बोल बोल। अभी तेरा, हाँ मतलब तेरा अभी 60% होल्डिंग है जैसे तूने बोला, और उसका 75 इज 45. तो हम्म। अगर तू 45 से 45 के ऊपर सेल कर देगा, और वो भी 5 साल के अंदर, तो तेरे को वो एज डिविडेंड ट्रीट होगा. 45 के नहीं, अंदर एज मतलब एज तू बोलना चाहता कैपिटल है, एक गेन्स मिनट मिनट, ट्रीट. 45 के अंदर मतलब तू बोलना चाहता है 45 और 60 के बीच में अगर तू सेल करता है तो ना। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि तूने 45 के अंदर एज इन तेरे को 45 के ऊपर सेल नहीं करना है ना. सुन सुन, बेसिकली कैसा है, सपोज कर कि तू 60% ओन कर रहा था, ठीक है, एक कंपनी को। अभी बराबर. तुझे, बराबर. अगर सपोज कर कि तूने मतलब वो डिसाइड किया कि तू 12% शेयर्स को सेल करेगा। तो अगर 12 मतलब 12 इन हम्म. द सेंस 60 में से 12 जाएंगे ऐसा। ठीक है। अगर 60 में से 12 हम्म. जाएंगे तो फिर भी तेरे पास कितने बच रहे हैं, कितने बचते हैं फिर भी, 48 बचते हैं, बराबर है। विच इज मोर देन 48, द हाँ. विच इज हम्म. मोर देन द 75% डन ऑफ इट। अगर उसका 75% करेगा तो तेरे को 45 आएगा। तो मतलब ये जो 12% का 45 सेल आता है है. इसको ओके. एज अ डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा। यू विल स्टिल बी द शेयर होल्डर ऑफ हाँ. द कंपनी। लेकिन अगर तू 60 को 40% कर बराबर. देता है, मतलब तू अगर 20% सेल कर देता है, मतलब हाँ 20% सेल कर देता है, तो उसका ओके. तेरे को 40% बचता है समझ तेरे गया. पास। 40% बचता है इन द सेंस, अब तेरे बराबर. अब तूने जो किया है वो तेरा कैपिटल अब गेन्स तो. ट्रांजैक्शन है, ऐसा। बट अगर तुझे तुझे याद, मतलब वो याद होगा, हमने जो कल का सम देखा था, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एंटायर परसेंटेज ऑफ योर होल्डिंग। बेसिकली योर होल्डिंग ऑफ 60% इज योर 100%। मतलब ये काफी चूतिया लाइन हाँ, लग रही है मतलब समझ वो गया. सुनने में। बट तू जो समझा 60% समझा. ओन करता है वो तू 100% ओन करता है, राइट। अभी बराबर. तो 60 बराबर. का तेरे को 75% करना है। इफ 60 इज 100, देन व्हाट इज 75, देन वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तेरे को वहां पे 75. 45 आएगा, ऐसा। ओके. तो नाउ योर होल्डिंग शुड बी लेस, ऐसा। ओके. बट तो सेम ही हो गया ना, फिर 45 आ रहा है तो सेम ही हो गया इन दी एंड. अगर तू क्रॉस मल्टीप्लाई करके तू उसको 75% के रेशियो पे लेके आ रहा है तो उसका 45 बनता है। अब तू कितना सेल करता है कि वो हाँ. एंड में कितना बनता है। अगर वो एंड में 45 से ज्यादा बनता है, सो यू आर स्टिल अ शेयर होल्डर। उससे कम बन शेयर रहा है तो होल्डर, तूने यू विल बी कैपिटल गेन्स चार्ज. ट्रांजैक्शन किया है, ऐसा। बस उसके मतलब समझा. बस उसका परसेंटेज ऑफ, क्या बोलते हैं वो, टैक्स जिस पे तेरे को भरना है, उसके लिए है ये, और कुछ नहीं। यस यस यस, ऑफ कोर्स. मतलब तेरे को एज ट्रीटमेंट क्या दिखाना फिफ्थ है. लाइन भी कुछ तो है। Shareholder must not immediately after the purchase be connected with the company, that is be able to control it or be in possession of 30% of the voting power। अच्छा, तो ये भी एक ये एंड है शायद, मुझे लगता है कि तू इतना बेचने के बाद तेरे को बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं रहना है कंपनी के साथ। ओके, ठीक है। Yes.
that is being able to control it or be in the possession of greater than 30% of the voting power. ठीक है. The purchase ये must एंड ही होगा be ना, for लेकिन the ये एंड benefit ही of होगा the मुझे trade. लगता है। अगर एंड होगा हाँ तो इसका हाँ, मतलब है मतलब ये कि सारे अगर तू पॉइंट्स उसको होने 60 चाहिए. से, हाँ अगर तू उसको 60 से 45 के नीचे लेके जाता है तो भी शायद ठीक होगा, लेकिन फिर तेरे को 30% से ज्यादा ओवरऑल ओन नहीं करना है कंपनी को, लाइक ऐसा। हम्म हम्म. बराबर. ठीक है। करेक्ट. और यहाँ पे द परचेज मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ट्रेड एंड नॉट पार्ट ऑफ अ स्कीम टू अवॉइड टैक्स. फॉर एग्जांपल बाइंग और रिटायरिंग डायरेक्टर्स, buying out dissident disruptive shareholders. Okay, a shareholder has died and the beneficiaries do not want the shares. A venture capitalist withdrawing investment. ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट withdrawing. वेंचर कैपिटलिस्ट क्या पता है? हाँ। अच्छा, मतलब तू वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू अगर ये कंपनी में तूने इन्वेस्ट किया रहेगा और तू वापस फिर ये कर रहा है, कंपनी को वापस बाय बैक करने दे रहा है, वैसा नहीं चलेगा. ठीक है, हम्म। क्योंकि वो फिर तेरा इसमें ही चला जाता है, वीसीटी का इनकम में ही चला जाता है, सीजीटी में हाँ। नहीं आता. If any of the above provisions do not apply, the payment will be treated as a distribution. Any of the सब कंडीशन सेटिस्फाई करने हैं. सारे कंडीशन से सेटिस्फाई कंपनीज में करने सीक चाहिए। एचएमआरसी. हम्म. कंपनीज में सीक एचएमआरसी क्लियरेंस to ensure that the capital treatment applies. Note that the taxpayer cannot choose which treatment is to apply. If the specified conditions are fulfilled, it must be treated as a capital disposal, and if not, it will be an income distribution. ठीक है, मतलब वो क्या है, मतलब वो इसके ऊपर नहीं है। नॉर्मल जिस बंदे के पास शेयर होल्डिंग है वो बंदा नहीं इसे ले सकता कि इसको एज अ डिविडेंड ट्रीट करो, कि इसको एज अ कैपिटल ट्रांजैक्शन ट्रीट करो। हमें एज टैक्स एडवाइजर ही हाँ, सोचना पड़ेगा। ठीक है, वो तो बेसिक है। वैसा. यस. यस. Tax treatment तो अपने को पता ही है. अगर if treated as CGT, normal CGT computation, if treated as an income distribution, the amount of distribution in excess is the excess of the payment over the amount originally subscribed for the share. If the member in question was not the first shareholder of those share capital of those shares, a capital loss will arise, calculated as the difference between the subscription price and the cost of the shares to them. Where the person whose shares are being purchased is a company, HMRC will always treat the event as a capital disposal. ओ, Okay. ओके, ऐसे है ना। Whether any legal was on the expenditure incurred by the company in purchasing its own shares will not be. हाँ, ठीक है. क्या बात कर रहा है, ऐसा है That कि will अगर be. बायबैक कर रहे हैं शेयर्स तो हमेशा कैपिटल डिस्पोजल की तरह ट्रीट करेंगे। हाँ ना. तो फिर ये ऊपर के पॉइंट्स इतने सारे दिए, उसका क्या? आई थिंक वो इफ ट्रीटेड एज कैपिटल डिस्पोजल अ नॉर्मल सीजीटी रूल अप्लाइज। बट फिर ये लाइन का मतलब ही क्या है, वेयर द पर्सन हु शेयर बीइंग परचेज फिर क्या कैपिटल, तुमने पहले लाइन में मैं बोल तो दिया है कि इफ इट इज अ कैपिटल डिस्पोजल देन नॉर्मल सीजीटी रूल विल। वही. वही. ठीक है भाई। मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि अगर जो सामने वाला मतलब अपने को बायबैक कंपनी कर रहा है और जो हम्म। सामने वाला देने वाला है ना, वो भी अगर कंपनी होगा तो कैपिटल डिस्पोजल ही माना जाएगा, बोल रहे हैं. ओके 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 ओके। परचेस्ड पर्सन whose shares are being purchased is a company, ऐसा. ठीक है। Liquidation is the last part. Many people associate liquidation with the Many people associate liquidation with a company that has gone bankrupt. This is not always the case. A liquidation can be effective way of extracting the final value of the company, where हम्म। the net assets of the company are worth more than the shares on a going concern basis.
or no one wishes to buy the shares in the company as it stands. अरे भाई इज्जत ही निकालो. The process of liquidation is normally as follows. The liquidator is appointed and the trade ceases. The asset of the company are sold, the outstanding debts are collected, and the हम्म, liabilities are paid. There will be corporation तो tax due on any हम्म, profits and gains made. बोल बोल. तो जिस दिन तू लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है, अपॉइंट हो गया लिक्विडेटर, उस दिन मतलब से. ये बात मतलब वो दुनिया में फैल गई कि भाई ये बंदा अपने शेयर अभी बेचने वाला है। तो उसके बाद अगर तू डिस्पोजल Yes. करेगा तो उस चीज को कैपिटल गेन्स माना जाएगा, या मतलब वो कैपिटल ट्रीटमेंट होगा। अगर तू लिक्विडेटर को हम्म. अपॉइंट करने के पहले पहले अपने सारे शेयर होल्डर्स को पे कर रहा है, और अगर शेयर होल्डर्स अपने शेयर बेच के जा रहे हैं, तो उसको डिविडेंड मतलब माना जाएगा, ऐसा। Yes. Perfect. बाद में भले शेयर होल्डर्स बेच दे, Perfect. लेकिन लिक्विडेटर अपॉइंट होने के बाद लेकिन फिर भी उसको कैपिटल गेन्स में ही माने जाएंगे, ऐसा है हम्म. डिविडेंड। हाँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा है वो पॉइंट जो तू बोल रहा है. इफ द पेमेंट्स आर मेड टू द शेयर होल्डर्स बिफोर द लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड दे आर टैक्स्ड एज डिविडेंड. आफ्टर द लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड दे आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट्स सॉरी, मैंने एक फॉर द चीज गलत डिस्पोजल ऑफ बोली। द शेयर. अगर वो खुद बेचेगा तो उसको कैपिटल गेन्स ही माना जाएगा, अगर कंपनी खुद से पेमेंट देगा तो उसको डिविडेंड और उसमें मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हाँ करना है हाँ अपने हाँ. को। सॉरी, वो मैंने गलत हम्म. Whichever of these two the taxpayers prefer will again depend on the taxpayer's relevant income tax. ठीक है. Winding up, the cost of appointing and paying a liquidator can be high. Where the business is profitable, it is possible to wind up the company without the formal appointment of a liquidator. HMRC will allow payments made to shareholders to be treated as capital, even though no liquidator has been appointed. ठीक है. The company is being wound up and all liabilities are agreed and subsequently paid, including the individual's personal liability on any distribution of the company. The total payment is no more than 25,000. ओके। किसको पेमेंट क्या पेमेंट एक सेकंड. Allow payments to shareholders to be treated as capitals. Okay. If the payment is more than 25,000, the whole amount will be treated as a distribution. A major element in the planning of a liquidation is decided whether the investment should be withdrawn in a form बेसिकली ये treated as क्यों है income पता or है क्या, कि capital. तेरे को तेरा देखना रहता है कि तेरे जो मेजर शेयर होल्डर्स है वो मतलब वो बेसिक रेट बैंड में आ रहे हैं कि वो हाई रेट बैंड में जा रहे हैं, ऐसा। हाँ. बस उसके Yes, लिए yes, yes, होता है yes. ये।